आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आंसर तो गूगल भी है, गूगल करो तो वो भी मिल जाए आंसर। पर आंसर देने का जो तरीका है दैट टेल्स योर प्लास्टिसिटी ऑफ माइंड। तो हमको बोलना पड़ा, हो गया जरा आईपीएस में था वो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे ही मैंने क्वेश्चन करने के लिए पूछा कि मेथड, सर आप मेथड पूछ रहे हो, मेथडोलॉजी पूछ रहे हो, वो फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो मेथड क्लैरिटी डेवलप करो, मेथड तो व्हिच मेथड आई एम यूजिंग, बट उस मेथड के पीछे जो साइंस है उसे मेथडोलॉजी कहते हैं। तो व्हिच मेथड, आई एम सपोज आई एम यूटिलाइजिंग अ मेथड कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस का साइंस क्या है? रिलेशनल एनालिसिस है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, उसके पीछे साइंस क्या है? साइंस इज मेथडोलॉजी। ठीक है, हम लोग ये सब टर्म इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, और ऐसा मत किया करो। जैसे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट टर्म हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। डोंट यूज सच काइंड ऑफ टर्म। और कुछ, और एनी अदर क्वेश्चन? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? थीसिस कैसे लिखते हैं? पेटेंट कैसे कराते हैं सर? अगर पेटेंट करानी है तो आप तो पब्लिश नहीं कर सकते, आपको कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। कॉपीराइट जनरली प्रोसेस का करते हैं और पेटेंटिंग जनरली प्रोडक्ट का करते हैं। तो आपका वो अगर टेस्ट है, जैसे डैनियल गोलमैन नाम सुने हो ना? डैनियल गोलमैन को एक बार हमने आईआईटी में इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, डैनियल गोलमैन को हमने एक बार आईआईटी खड़गपुर में इनवाइट लेक्चर देने के लिए। उनका 2 पेज का एक टेस्ट है, 2 पेज का ही तो टेस्ट है बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने कहा कि हम 1000 उसके लिए चाहते हैं, व्हाट वुड बी द कॉस्ट? दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, 45 लाख। अब 2 पेज का टेस्ट, हाँ, उसको जब चाहो फोटोकॉपी करा लो, और हम फॉर्मल तरीके से कराने गए तो 45 लाख मांग दिया, क्योंकि वो पेटेंटेड है। रॉसा टेस्ट आप फोटोकॉपी कर सकते हो? नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बना दी, पेटेंट करा दी। देखो पेटेंट कराओ, अपना काम पब्लिश होता रहेगा, देन इट बिकम्स योर प्रॉपर्टी। तो हम लोग अपना प्रॉपर्टी अगर बना, हम टेस्ट को भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और उसके लिए पेटेंटिंग के लिए बहुत सारे लॉयर्स मिलते हैं। किसी से भी कौन सा पेटेंट मतलब ये नहीं है कि ये हमने प्रोडक्ट बना दिया इसका पेटेंट हो, तो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का पेटेंट करा देंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे? इट्स पॉसिबल। और एनीथिंग एल्स? पूछो पूछो, अब हमारे जाने का समय हो गया। जो भी anything that you, otherwise I will show you something else but that may not be of your interest। इसलिए अपना पहले जो issues है, problems है, questions है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब चीज का आंसर है। I have spent my life, and ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस में है हम आपके साथ शेयर करें। थोड़ा जियोग्राफिकल रिसर्च के बारे में, जियोग्राफिकल रिसर्च देखो, इनफैक्ट जियोग्राफी एंड एचएसएस पास डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ आईआईटी। जियोलॉजी जियोफिजिक्स है। देखो जियोग्राफिकल रिसर्च में हम लोग जैसे कल्चर बेस्ड रिसर्चेस करते हैं, वैसे जियोग्राफी बेस्ड रिसर्चेस भी कोई मोस्टली जियोग्राफिकल रिसर्चेस में लोग एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्चेस में कराते हैं। मैं नहीं कराता बट डिपार्टमेंट वाले कराते हैं। पर जियोग्राफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी। एंड जियोग्राफिकल साइंसेस में देखो, अगर मटेरियल साइंस में जाओ तब तो दूसरे तरह का रिसर्चेस, मटेरियल साइंसेस। जियोग्राफिकल रिसर्चेस में टोपोलॉजी बेस्ड रिसर्च करो, तब तो तुम्हें जीआईएस की बात करनी चाहिए। जैसे डीआरडीओ में हम लोग जियोग्राफिकल रिसर्चेस यूज करते थे
कि असम वगैरह में जो एक पिक्यूलियर डिजीज है असम में, वो मच्छर से एक्चुअली उसको वो वाले डिजीज कहते हैं। तो we used to use satellite images in order to understand which area is more mosquito infested. अब तुमको एक तरीका बता रहा हूँ एग्जाम्पल, और हमने जब पाया कि दिस इज द एरिया को क्या कहते हैं, कौन सी एरिया है, इससे है गॉट इट मैं बोल रहा हूँ। एनीवे हमने जब आइडेंटिफाई किए तो हमने मच्छर को कम करने के लिए अट्रैक्टिसाइड यूज किए, एक केमिकल बनाए जिससे कि द मॉस्किटोज वुड बी मोर अट्रैक्टेड टू दैट। सिलीगुड़ी बंगाल में पड़ता है, सड़ाई मैं भूल रहा हूँ। एनीवे आइडिया वो नहीं है, आइडिया ये है कि ज्योग्राफिकल रिसर्च करके हमने आइडेंटिफाई किए कि वेयर द मॉस्किटोज आर मोर इंटरेस्टेड, और उनके उन एरियाज में हमने अट्रैक्टिसाइड डाल दिए। अट्रैक्टिसाइड माने वेयर द मॉस्किटोज वुड बी मोर अट्रैक्टेड, वी अट्रैक्ट देम एंड किल देम। इट हैज कम फ्रॉम ज्योग्राफिकल रिसर्च। इट हैज द avalanche का जो स्टडी है व्हिच इज मोर prone to avalanche, which area is more prone to avalanche, हम लोग ज्योग्राफिकल स्टडीज करते हैं, जीआईएस से क्लू लेकर करते हैं। तो इसमें जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो भी हम लोग स्प्लिट प्लॉट फैक्टोरियल डिजाइन करते हैं। आई डोंट नो वेदर यू पीपल यूज इट और नॉट। स्प्लिट प्लॉट फैक्टोरियल डिजाइन, ये भी एक फैक्टोरियल डिजाइन है, वो ज्योग्राफी से है। अच्छा सर, अगेन कमिंग टू द मेथड एंड मेथोडोलॉजी, यस, अगर हम जीआईएस को ही लेकर के बात करें तो कोई हमसे ये पूछे अगर हम जीआईएस यूज कर रहे हैं तो इट वुड बी माय मेथड, जीआईएस मेथड के थ्रू हमने जीआईएस आपकी मेथड, जीआईएस की जो साइंस है, जैसे हाउ एक्यूरेट इट इज, जैसे सर इमेज प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, superimposed classification, unsupervised classification, all these comes under methodology of all these comes under the science behind it. Science behind So your method is GIS, but your methodology is what are the attributes of that method. That becomes your methodology. And GIS is your primary instrument. देखो जियोफिजिक्स का ये जो ओशनोग्राफी का जो रिसर्चेस हैं मेनली जियोग्राफिकल स्टूडेंट्स ही करते हैं। एक लैब है हम लोगों का, नेशनल ओशनोग्राफिक रिसर्च लेबोरेटरी है, तो मेनली जियोग्राफिस्ट है वहाँ, मेनली जियोग्राफी के लोग, एंड दे डू सीबेड पे जो भी रिसर्चेस करते हैं, जो भी ऑयल माइनिंग का जो मेन रिसर्चेस हैं वो सब जियोग्राफिस्ट के लोग करते हैं। तो आइडिया ये है कि any research that you do, methodology is same. आपको रिसर्च का फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप मैनेजमेंट करो, ज्योग्राफी करो, साइकोलॉजी करो, डजंट मैटर। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे इस रिसर्च में ज्योग्राफी के जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी को हम कैसे यूज करें, ठीक है, because every science has its own methodology. जैसे GIS, methodology is the same maybe, but the methods are different. Your method is different from our kind of method. We use, for example, psychological technique, or psychological scaling technique, or psychophysical methods. So these are all techniques. But techniques and the science behind the technique are two different things. This we have to understand. We take a lot of geophysics people and geological people, geography people, geology, geography, geophysics, for doing all these kinds of researches. You are from management? Huh? You are also from geography. What is the major challenge that you face? Why not you tell this audience? How suppose geography and psychology को अगर हमको मिलाना है, what is that possible? Talk about the topic.
geography is the basic factor that defines a person's psychology. Climate, types of agriculture, types of crops that have to be. So we do cross-cultural research, and we do if we do cross-geographical research. I mean on regions, based on regions. तो इसलिए आजकल क्रॉस नेशनल रिसर्च वी यूज क्रॉस कल्चरल कम करते हैं, है ना? जब हम क्रॉस नेशनल यूज रिसर्चेस करते हैं, देखो एनी गुड रिसर्च हैज गॉट थ्री कंपोनेंट्स. वन इज transdisciplinarity, one is translational characteristic, and one is transnational characteristic. तो जब ये transnational, transdisciplinary and translational हो, तो it becomes a fantastic research. कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कंपोनेंट हो, पर तीनों में से एटलीस्ट दो कंपोनेंट हो. तो ट्रांसनेशनल कंपोनेंट में तो ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी कैन ऑलवेज कम थ्रू. हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो किर्गिस्तान पे हमारा एक लैब है, किर्गिस्तान पे, एंड we have a defense lab in Kyrgyzstan from our center, DRDO. An idea क्या है, हमने ये देखा कि हाई ऑल्टीट्यूड में उनको दिक्कत नहीं होती है सीढ़ी वड़ी चढ़ने में, because the whole country is at 16,000 feet. और हम चाह रहे थे कि हमारे सोल्जर्स जो है they also become competent in high altitude warfare. अब हाई ऑल्टीट्यूड में how do they survive and make them so efficient, so that culture I can adhere to my soldiers, which may help them also to do that high altitude warfare. So only geography and psychology will come together, then only it is possible, na? The entire country is on 60,000 feet and they are very efficient, and you do not find that अगर आप लोगों में से कोई high altitude में कोई नहीं गए, you have not gone anywhere in high altitude. हिमालय के किसी भी पार्ट में आप लोग कहीं नहीं गए? शिमला गए, मगर शिमला बहुत ऑल्टीट्यूड में नहीं है, और उसके ऊपर सिक्किम. नाथुला गए? रोहतांग तो करीब 12,000 फीट तो होएगा रोहतांग. तो चलने में दिक्कत नहीं होती है. सर बद्रीनाथ है. बद्रीनाथ, my topic is on that only. My topic is on that only, बद्रीनाथ. So I just want to ask one question. नहीं, बद्रीनाथ पहले बताओ. बद्रीनाथ itself is a table top, but बद्रीनाथ जाने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है हाई एल्टीट्यूड, है ना? 3,000 something. Yes. 3,000 meter, not feet. 3,000 meter. आप बताओ. Sir, I want to ask that my topic is role of religious tourism on socio-economic development, a case study of Badrinath Yatra. What can we add in this topic to make it as a surprising element in that? It is a very common thing that we will take the question and we will take the interview. What can we add to make it a peculiar one? देखो हमको अगर करना होगा, देखो peculiar तो एक काम है. If I have to do, I will redefine sacrifice, self-sacrifice. Because it's a journey. It's a journey, and you feel that if you go up to that level, if you do some kind of sacrifice in terms of your physical stamina, in terms of your money, in terms यात्रा हम लोग क्यों करते हैं भाई? कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं. जैसे जम्मू में जब जाते हैं वैष्णो देवी, हम 3 बार गए हैं, 11.5 किलोमीटर है, ठीक है. एंड क्वेश्चन ये है कि हम वहां तक चढ़ते हैं 11.5 किलोमीटर, फन के लिए तो नहीं करते हैं ना. तो हमें लगता है कि I have to do some kind of sacrifice in the name of God. And what is that sacrifice? Your health, your spirit, your money, your everything. You do some kind of sacrifice, no? So question ये है कि हम लोग जो ये करते हैं, हम sacrifice को redefine करेंगे कि how sacrifice give us pleasure. I would have done it. ये जो यात्रा करते हैं, तो spiritual gain, where from they gain the spiritual gain?
From profit or from loss? From loss only, huh? The loss is the sacrifice, isn't it? So, gain and sacrifice का जो fundamental conflict है, I would like to revisit that. That why do I go there? Is it due to somebody's suggestion? Is it somebody's belief? Is it somebody's thought process? I would like, if you are doing a psychological studies, I would like to redefine the process. Why people do that? But it's not geographical. I'm from geography. Why? Oh, you are from geography. Yeah. So, again, the topic is what is the topic? Role of religious tourism in socio-economic development, a case study of Badrinath. So, what is the geographical variable you have taken? You have taken Badrinath. Yes, sir. The study region is Yatra. Not only that, town, the whole Yatra happened. Right from the Haridwar. Okay, but the topology becomes more important for you. What is that you are really studying? Topic तो समझ आ रहा है, but The actually my main focus is on the tourist, how they are affecting the social economic development there. oh, so how they are influencing the local? Influencing them. Oh, that's the difference. Is they are influencing or not? Is there Definitely any they are contribution influencing. or not? But is it a business model or is it academic model? It's Business model. हाँ, तो ये मॉडल को डिफाइन करना पड़ेगा फिर. I thought you were from psychology. No, sir. तो मॉडल को अगर डिफाइन करना पड़ेगा, तो बिजनेस मॉडल में तो आपको देखना पड़ेगा 10 years बैक आपका डेटा आर्काइवल डेटा लेना पड़ेगा. 10 years back, what was the archival before यात्रा? और suppose 10 years का जो archival डेटा आपके पास है, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना, कि whether it has really improved or not. Before Kedarnath tragedy. Yes, yes. You take an anchor. केदारनाथ ट्रेजेडी को एक एंकर मान लो, और उस एंकर के पहले और एंकर के बाद, और you may also think that केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई वो कब 2013 पे, तो उसको एंकर मान लो, तो प्री एंड पोस्ट स्टडी कर लो, and I think that will give you a much better result. So then you can study the impacts of that tragedy on socio-economic status and get a trend of it. You are getting a quadratic trend that the socio-economic status of the local populace was increasing. After the tragedy, it has gone down. So it's a quadratic angle. You do a trend analysis of the data, secondary data. It has gone down, and then once again it is rising. So now once again people are doing that yatra. So इसको कहते हैं trend analysis. Whether it is a linear trend, or quadratic trend, or quadric trend, or quintic trend, over the years, the trend analysis of the yatra would be a better methodology for you then. First you had yatra, people were, during the yatra a lot of socio-economic developments were taking place. You remember the National Highway Authority has made it a point on geographical basis that wherever they have had a highway, the socio-economic status has improved, because they believe that in earlier time, wherever there was a river, the socio-economic status was uprising. But now they believe that rivers they cannot create everywhere, but they can create highways. If they create highways, they can improve upon the socio-economic status of the country. So along with the highways, along with the yatras, along with the Char Dham, actually there are socio-economic developments. What is the trend in it? That trend through the archival research based on an anchor. A disaster can be anchored. Anchor के पहले, anchor के बाद. That could be a good research. Anything else? So I have a question. Better बताओ ना. So I just wanted to know how we can embed our work, research work, in context of the theoretical framework that we usually choose. For every research work, there is at least one theoretical framework that we refer to make our conceptual framework. So, sir, how can we do that? Because there are times when we find a theoretical framework, like
I give you an example of a model that I saw, Bronfenbrenner's socio-ecological model. So that model fits pretty much well with the topic that I'm working on. I'm working in the field of cyber psychology, and the topic that I've chosen is cyberbullying and its psychological consequences. So the model is actually old. There is a revised version as well, but that model was given by Bronfenbrenner in the year 1977. But it fits very well with the research questions that I have for my own topic. So how can I embed it, and how can I have certain surprise elements that I have found that this can be added according to the gaps that are there in the literature. So I find it pretty. Instead of embedding it, why not you challenge it? I think it would be much better if you challenge it. There is a theory which is already available along the line of my hypothesis, but your primary objective is to challenge it. And then if you go back to the original theory of that person, fine, but your approach should be novel. I told you either no knowledge to new knowledge, or challenging the existing knowledge, or accept the existing knowledge with a surprise element. These are the three ways we can do research. So instead of accepting the theory and then bringing a surprise element, you challenge the available theory. You revisit the theory. So when you revisit the theory, the person who developed the theory, they become interested in your work, because that gives them more citation. Anytime you replicate somebody's work, it does not come as a citation. Citation समझते हो कि नहीं? If you repeat their work, it doesn't come in citation. It comes in a work when your work is being challenged and referred to other journals. So you challenge the work. Your hypothesis and objective would be to challenge that framework. But then you have to find the gap in the literature, in this theoretical model. So what has been found, what has not been found, what could have been found, and what you aim to do. So find out those gaps, challenge it, and develop hypothesis based on that gaps in that theoretical model. Accept the theoretical model, but then challenge it, instead of trying to embed it. Another question in line of that, like in the last session we were discussing that topic is very important when it comes to presenting your work. So there are certain papers that are there in the Western context, and they usually start with certain phrases like digital space, a double-edged sword, like that. And then they discuss about the topic in like less than 16 words, as you said. So here in India, we don't usually see like those catchy phrases. So is it okay, like if we now we start doing it? Is it gonna make any difference, or otherwise, I don't want like the journal editors to reject the paper on the basis of those catchy phrases only. Look, the catchy phrases, if you can operationalize, I was discussing with him, unless you operationalize it, they will not. If you use a catchy phrase and then operationalize it, you were talking about alienation and loneliness, you were talking about it. So suppose I use a word loneliness, but is it alienation? Is it social isolation? Having a concept and having a construct are two different things. My mother says my son is very intelligent. It's a concept, it's not a construct. If it has to be a construct, my mother should be able to tell my son is more intelligent than others. So my mother should be able to measure my intelligence and others' intelligence. And on the basis of that, my mother should make a conclusion. Then it becomes a construct. Construct means when scientific concept is called construct. And when you make a construct, you identify the variables. When you identify the variables, you know that varies. When you know that they vary, you have a measuring device for that. So when the measuring devices and the variables are identified in your own definition of that novel statement, cyberspace, okay, then only it becomes a scientific construct and nobody will reject that. So when I use drone, stone and clone, I mean in our military phrase, in one of my books I have used it, drone, stone and clone. Drone means unmanned aerial vehicle. Clone means your cyberbullying, I mean cyber criminal, and stone means low intensity conflict. So I have used three words, drone, stone and clone.
But I have operationalized each of these. By drone I mean unmanned warfare. By clone I mean invisible warfare. By stone I mean low intensity warfare. When I define it, then nobody will reject it. But if you leave it there, cyberbullying, people will not accept it because they have not come into the phrases. That's why emotional intelligence have not come still in the textbook of psychology. No textbook of psychology actually included emotional intelligence because this has not reached to that level. It's fine. So I just wanted to know, like, when we decide upon the research design of our work, since I found that using quantitative measures would give me a good idea, and maybe some correlation work and some regression-based models would give me a predictive idea of that as well. But if since this area is still growing, like there has been a term suicide, and people started using the word bullycide when bullying researches were going on. Because of bullying, people attempted suicide. Now there is a term called cyberbullycide, which is happening due to cyberbullying, as the name says it. So I just wanted to know, like, if I use Creswell's sequential explanatory model design, then I can get a better idea of the quantitative data because numbers can't tell everything. So I'll use a qualitative to understand it in depth, like the parental style and the attachment style of the children in terms of that. So is that okay? I mean, it should be okay. देखो, using term is not a big issue. Like हम लोग suicide, simplicide, family side, factory side, we are using all these terms. But every time, whatever we use, factory side is when you actually commit suicide after killing your superiors. Simplicide when the entire family commits suicide. Okay. So when I conceptually define homicide, for example, when I conceptually define the domain and isolate my variable, my particular concept, operationalize it, define it, identify the variable, and tell about the measuring devices, it's perfectly okay. Perfectly okay. Because a lot of people are committing suicide through, YouTube, they actually portray themselves when they commit suicide. They actually do this. And in fact, there are disturbing features coming up, and government is also planning to do something about it. But that part is okay. But one of our major problem is that when we think about research now, we try to do everything. ये भी include कर लो, वो भी include कर लो, वो भी include कर लो. Ultimately, the research is spoiled. अगर तुमको कोई खाना खाने के लिए बोले और अगर 56 different type के सब्जी दे तो खा तो नहीं पाओगे, you will not be able to enjoy it. Isn't that? तो research में भी वही है. अपना position को justify करो कि what is my limit. Research means you must be able to work limitlessly within the limit. It's a research guide. Within the limit, you must be able to work limitlessly. First, you define your domain. I'll not go beyond this domain. And then you enter into it, deep into it. It should be a T-separate. First, you clear the horizon, and then vertically try to understand what precisely. The unclear topic and clear topic में मैंने बताया ना कि global warming and climate. With global warming, what kind of global warming? It's a geography topic. Okay. Now, if you say that I'm snow melting in Arctic region, how it is creating flood? Okay. Why the sea level is rising? Okay. Then there's a clear relationship possible. Otherwise, global warming is a non-specific statement. So unlike NITs and IITs, we have in central universities there is a provision of choosing a topic within a limited time. Like if a person has been selected in the interview, they have to decide their topic in a span of 3 to 4 months and get their RDC done. Then only they are registered candidates. Yes. But in NITs and IITs, usually people are given time, say like 1.5 years, and so they
get their coursework done, they get the state of the art and comprehensive done, and then they decide upon the topic. Yes, yes. So, of course, they have a better idea. Their topics are much more clearer than what we have. We usually take a broader one so that we can narrow it down later on. Once we have some more clarity of it, once we're done with our literature review. So, since most of us have our topic in the most broader form of our areas, whatever topics or variables we have picked. So, are we at any disadvantage there? In IITs? Over here, I mean, in comparison to other students. Look, my view is that the IIT structure is meant for doing transdisciplinary and interdisciplinary research. That's why they want a credit course in that particular subject. So there was, there is a fundamental difference between raw material and finished product. Okay. So when people do research within 3 months, they select their topic, finalize it, they are already finished product. In the sense, you have developed mastery in a given subject and you would like to develop in that area. But if you are doing a transdisciplinary research, suppose you are interested in doing cyberbullying. Now, you have, suppose in computer science you do not have any idea. Okay, I can give you an example. One of our students is doing research in that area. They are trying to understand those who send wrong mails or suspicious mails. The pressure on mouse we are measuring. The pressure on mouse. That when you actually tell a lie, the pressure on the mouse becomes different. So we create games. अपना नाम गलत लिखो, type करो. So we found that the pressure on mouse is different. So suppose you are doing a psychological study and you have no idea about how the pressure on mouse could be sensed. तो बायोसेंसर यूज करना पड़ेगा. तो बायोसेंसर के बारे में अगर कोई नॉलेज तुमको ना हो तो तुम तो इसको कर नहीं पाओगे. तो इसलिए वहाँ क्रेडिट कोर्स करना इम्पोर्टेंट होता है जब तुम ट्रांसडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हो. But if you are in the subject and doing a disciplinary research within the discipline research, then within 3 months you should be able to develop your topic and move forward. So like I have one of my juniors from school who has done her graduation from IIT Palakkad, and she's very much interested in this area, and we just discussed randomly, and she suggested we can make a text mining model or something like that, that from social media we can derive certain like threads of comments and all, and we can just see the pattern, like how people, like what keywords they use. It's on a very I fully understand. Yeah. First of all, Palakkad is a very good institute actually. And Shraddha is, I know a girl, I don't know from the news only I read about her. She is going to Mars. The only Indian who was selected out of 2,25,000 people in the world. One-way ticket to Mars. Only 24 people are selected throughout the world. Only one Indian is selected, and she is a 24-year girl from computer science in PhD college, and she is a resident of Palakkad. Her name is just go. Shraddha. Title I don't know. So, well, that's a different story. But if these kind of people are doing research in psychological sciences, they must do it through IITs because these are interdisciplinary and transdisciplinary work. But suppose you are from psychology and you are in Allahabad University, you should be able to develop your topic within the framework that you have already come across. So you should go deep into it from there. But interdisciplinary researchers have got a different challenges. Within discipline has a different challenge, it is much more difficult. Transdisciplinary researches are altogether different thing where you have to develop a new methodology, how to attack such kind of problem. Okay, so when you said there are some models, theoretical models, some this model, but theoretical model and statistical model में कोई parity हम parsimonious हम लोग check नहीं करते हैं, none of us do it. We have a theoretical model, but we have a separate statistical model.
थियोरेटिकल मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल का जो पैरिटी है हम लोग यहाँ तक नहीं करते हैं, जो रेफरेंस इंट्रोडक्शन में लिखते हैं डिस्कशन में उसको यूज ही नहीं करते हैं। तो रिव्यूअर लिखते हैं भाई इसको लिखे क्यों है आप, why you have written all these things, तो जो आपने यूज ही नहीं किया। So these are basic flaws in our research. तो likewise आपने कोई statistical model decide किया research design में, how it is and if you want to challenge that theoretical model, why that statistical model will be able to challenge that theoretical model, that justification is more important, finding is not at all important. Okay, thank you. अच्छा, before we go to 5 मिनट और हैं, लंच के बाद we'll open it up. If we have got 1 hour, suppose if we start from 2:30 to 3:30, we'll open up, we'll have your questions ready. Whatever questions you have your questions ready, including, of course, I do not have much idea of geographical study, but we have, I have seen so many scientists have been doing geographical studies, I mean, in different forms and forums. One or two we have just discussed, but I am telling you that how I have started post retirement from the duties. Of course, I am teaching in IIT. इसको बंद करो, दिखा दे कम से कम, तो you will idea the same personality. Suppose I am trying to examine इसमें आ जाओ behaviometry. हम सब लोग साइकोमेट्री भी तो करते हैं ना, साइकोमेट्री हम सब लोग जानते हैं। I have started a new area. It's called behaviometry. Okay, and behaviometry में आगे बोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि पर्सनालिटी असेसमेंट हम कैसे करने लगे। I started using thin slices of behavior. Thin slices of behavior. For example, your sitting posture is a thin slice. Every sitting posture is meaningful. Every sitting posture gives us some indication about personality. So I am not doing precisely on personality. I do on deception detection bit. But how behaviometry is helping me grow a new subject matter. आगे चलोगे? या आगे चलो? I mean, how your gesture, facial expression, ये इंटरव्यू के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आगे चलो, दो चार दिखा दे, और चलो, देखो, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो आप करते हो ना, इसकी इम्पैक्ट जो इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं, तो आई डोंट नो वेदर आई हैव गॉट द इंटरव्यू वाला, एक बार उस पे देखो, एक बार आ जाओ, इंटरव्यू है तो वो मदद करेगा, इधर वो कर दो। इंटरव्यू में कुछ है और बैठ में आ जाओ, तो इंटरव्यू में आई डोंट थिंक आई हैव इट। तो पेन ड्राइव आपके पास, उसमें पेन ड्राइव में देखो, तो इंटरव्यू वाला तुम लोगों को मदद करेगा कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, ना हो तो इससे भी पर चल जाएगा, बताओ। आई से कुछ है? इंटरव्यू सर नहीं है, इंडक्शन है, इनोवेशन है, इंट्यूशन है। इंटरव्यू से और नीचे देखो, देखता हूँ हमारे पास अगर लैपटॉप में है तो मैं लेता हूँ। किसी को दिखा दो, किसी को तो कुछ पता चल जाएगा। जो स्लाइड पहले से जो पहले खुले थे सर, हाँ, जो आपने पहले खुले, इससे पता चल जाएगा। नहीं तो हम लैपटॉप से लेके आते हैं बेहोमेट्री, दो चार स्लाइड आगे बढ़ा दो, फिर पता चल जाएगा। क्विकली जस्ट आइडिया देना चाहेंगे कि अपने को अगर एक्सप्रेस करना होता है, तो अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हैं तो आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट चलो, ओपननेस अगर एग्रीएबल अगर है, क्लिक करो। जैसे नहीं बढ़ रहा, क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं इसके बाद में चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखो।
ये हैंग किया है शायद। यस सर। हाँ, सिस्टम हैंग कर दिया। हाँ, मैं देखता हूँ इंटरव्यू वाला है कि नहीं। दूसरे So, escape button सर basically I'm trying to understand without taking any input from the subject, if I can understand the subject. ये सर आप हाँ, तो आगे देखते चलो, क्योंकि हम बताना नहीं चाह रहे। एग्रीएबलनेस को हम कैसे जांच करते हैं, ओपननेस को हम कैसे जांच करते हैं, रिफ्लेक्टिव टेंडेंसीज को कैसे जांच करते हैं, और आगे चलो, थोड़ा सा समय लग रहा है। डोमिनेंट सबमिसिव ने देखो, ये सबमिसिव रखा है नीचे, है ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। तो इंटरव्यू देते समय हम लोगों को एक्चुअली एक्सप्रेस जो है, आप जो बोल रहे हो उसका वैल्यू उतना नहीं है, कैसे आप एक्सप्रेस करते हो वो भी मैटर करता है, ठीक है। और आगे चलो, सोशिएबल एंड शाई, देखो वो सोशिएबल है, ये शाई है, ठीक है। डोमिनेंस वाला देखो, लो ऑन डोमिनेंस, आपका एक्सप्रेशन आप कुछ और सोच रहे हो, पर इंटरव्यूअर तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो शाई है, इससे नहीं हो पाएगा। ये लो इन कॉन्फिडेंस, इसके सबका वो है, माने पैरामीटर्स है। और आजकल हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं इन पैरामीटर्स पे। हमें सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, उस सॉफ्टवेयर से हमको पता चल जाएगा कि इनके बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर हमको बता देगा, और हम अपना जो जजमेंट है सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं और फाइनली डिसीजन लेते हैं। जिसे हम बिहेवियोमेट्री करते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी है कि नहीं। और आगे चलो, पैसिव एग्रेसिव, एग्रेशन ओवरटली शो नहीं कर रहे हैं, पैसिवली एग्रेसिव है। पैरामीटर्स डेवलप कर, भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको पैरामीटर्स चाहिए, तो पैरामीटर हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, एंड देन वी हैव बीन आइडेंटिफाइंग पीपल, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड देम। आगे चलो, ये देखो, बैड पोस्चर, ईयर ग्रैब, लिप बाइटिंग, इजेक्टर सीट पोजीशन। आई मीन इजेक्टर सीट पोजीशन मैंने आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप ऐसे बैठे हो कि बस सवाल खत्म होते ही आप निकल पड़ोगे। हर एक का वो है। और आगे चलो, hands to cheek, blank face, furrowed forehead, for everything there is a meaning, everything there is a meaning। तो हम लोग पर्सनालिटी एग्जामिन जो करते हैं, और वो मान लो 16 PF करो या वो 5 फैक्टर वाला करो, उसमें तो क्या मिलता होगा। हमने उस एरिया को चैलेंज किया, मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई डेवलप थ्रू बिहेवियोमेट्री, नॉट थ्रू साइकोमेट्री। So we are developing software based on those behavior parameters, and we are finding that it's giving much better result about personality। हालांकि हमने शुरू किया डिसेप्शन से। तो ये फेस से जो है रिलायबल इंडिकेटर क्या है, स्ट्रेसफुल बिहेवियर का क्या क्या इंडिकेटर है, we have started identifying all these things। और आगे चलो, तो बहुत सारा रिसर्च फाइंडिंग है। कहने का मतलब है, हम देखते हैं हमारे लैपटॉप में है कि नहीं। इंटरव्यू के समय हम लोग अपने को जो प्रिपेयर करते हैं ना, खाली पढ़ते हैं, एक्चुअली कैसे प्रेजेंट करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन तो हम करते नहीं है बिल्कुल। जैसे सेल्फ इंटीमेसी बिहेवियर, इट मींस यू आर वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं सेल्फ इंटीमेसी। दीज आर ऑल सेल्फ इंटीमेसी बिहेवियर। How to present yourself? Presentability is an art. So people are doing research these days on this। और ये कोई साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट का नहीं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे अपने को प्रेजेंट करना तो एक आर्ट है ना, साइंस भी। तो साइकोमेट्री के बदले में आई हैव स्टार्टेड डूइंग बिहेवियोमेट्री, एंड इस समय बिहेवियोमेट्री आई एम डूइंग इट फॉर मेंटल पेशेंट्स। कैन आई आइसोलेट पेशेंट्स based on their behaviometry, how they look at, how they sit. The anxiety neurotic patient will sit differently, the schizophrenic will sit differently। So there are parameters। और schizophrenic को तो हम बोल नहीं सकते हैं भाई तुम schizophrenic हो कि नहीं, लिख के बताओ। तो psychological studies में you can always invent something new।
But while doing that, don't restrict yourself to psychology only. You derive inferences, findings, methodologies from other sciences as well. That will solidify your research findings. So this is just an example. अगर हमारे पास इंटरव्यू वाला है तो हम आपको आगे पोस्ट लंच दिखा देंगे, नहीं है तो भी आपको एक आइडिया तो मिल गया कि हाउ थिंग्स आर टू बी डन, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. ओके, चलो और कुछ है इसमें. देखो ये ऑटोमेटेड सोशल सीखना, हम सेंसिंग करने लगे, टोटल फेस रीडिंग करने लगे, टोटल बॉडी को रीडिंग करने लगे, ठीक है. एंड हु आर डूइंग इट? द साइकोलॉजिस्ट आर डूइंग इट. और ये जो रिसर्च है ना, इस रिसर्च से हम लोग पता लगा रहे हैं वेदर यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग और नॉट, whether you like the product or not, just by a CCTV footage हम सॉफ्टवेयर यूज करके बताएंगे भाई ये जो हमारा कस्टमर है हमारा सामान खरीदेगा, और ये माइक्रो मोमेंटरी एक्सप्रेशन से हम जज करेंगे. साइकोलॉजी वाले करते हैं. और ये जो करते हैं ना, ये इसमें हम प्यूपिलरी साइड से करते हैं. जैसे क्लास में बैठे हो, सब लोग देख रहे हैं मेरे को, किसी को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है. भाई किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं, ये करने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग. जैसे मान लो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शोइंग दैट यस यू आर शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सपोज आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ व्हेन यू आर इंटरेस्टेड एंड आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड. दोनों को सुपर इंपोज कर दो, डिफरेंस खाली प्यूपिलरी साइड से रहेगा, क्योंकि that is autonomic reflex, you can't control it. If you are not interested, it will not be dilated, it will be squeezed. So, I mean, people have been doing lot of such researches. Question ये है कि we can go beyond questionnaire and we can do lot of other kind of experimental, quasi-experimental studies, even some kind of test also. So before we go for lunch and explanation, one of my, but don't take it otherwise, one of my mathematics colleagues said कि तुम लोग साइकोलॉजी वाले खूब झूठ बोलते हो, मुझे जानते नहीं हो. तो मैंने कहा अच्छा झूठ बोलते हैं कि नहीं, अब आपको दिखाते हैं. हमने कहा आपको I'll show you two photograph of two ladies and I'll tell you on which face you are more interested in. Don't take it otherwise. तो he said कि बोल ही नहीं सकते आप 10 बार दिखाओ. तो हमने I have shown him two photographs and every time I took his photograph. Okay, every time I took his photograph and then I said that you are more interested in this photograph, not in the other photograph. उसको थोड़ा सा समझा के लगता है कि हाँ भाई तुमने कहा मगर कैसे कर दिया. And I did simply the analysis of this pupillary size. हाँ, मैं भी बदमाश था. सेकेंड वुमेन का फोटोग्राफ उसकी मिसेस का फोटोग्राफ. चलो चलो